So welcome to the VA session with Catway, guys. We are doing this VA session after a long point of time, but again the crash course was going on, so I was a bit busy. So that was the case. Today again we will be doing some around 15 odd one out and summary based questions along with some parajumble questions. Today our main focus will not to attempt the question, but our main priority will be to select the questions that we need to attempt in CAT. Because now you are at that point of time where your selection is more important than how much you have knowledge about all these VA sections, right? So that's why our priority will be to discuss whether we should have attempted these questions in CAT or we should have rejected these questions, right? So we'll be discussing all of them. I'll be discussing all the difficulty criteria. Was it difficult? Was that easy, etc., etc. And see, in CAT, your main motto should be there are 8 VA questions, right? Out of which, trust me, 3 questions, there will be 3 odd one out, around 3 parajumble questions, 3 para summary questions, and 2 odd one out questions. By the proper standard that the CAT has set in the last 2 to 3 years. If it comes with something new, we don't have any idea, but we are preparing for the best. So in that best scenario, what will happen? You will have 3 para summary questions, 3 parajumble questions, and 2 odd one out questions. Trust me, guys, 1 parajumble question, 1 para summary question, and 1 odd one out question will be very easy to attempt. Very easy to attempt. I'll show you guys some of the easy questions, some of the difficult questions, some of the moderate questions. I have gathered them all to showcase you. So at first, your attempt should be, as I have already discussed with all the Catway students, they know those who are new and those who have not attended the sessions earlier. I'll suggest you one thing. Just start with 1 VA question. That will give you the momentum, that will give you the flow to attempt the RC questions. And once you feel that monotonicity is there in CAT, switch to VA questions, attempt 2 to 3 more VA questions, again switch to the RC, and at the end, keep 5 or 6 minutes of time to solve the rest VA questions. The priority should not, the focus should not be on solving all 8 VA questions. Your priority should be to solve 5 or 6 VA questions with a good accuracy. And it will give you that, वो होता है ना कि 3 RC कर लिया तो VA के लिए टाइम नहीं मिल रहा है सर, क्या करूं? ठीक है, तो उसी चीज से बचने के लिए, क्योंकि क्या होता है, once you are attempting the RC, those who are attempting all the 4 RC, this is not the strategy for them. और ये उनके लिए भी लागू होती है कि once they have gathered the momentum, 3 RC कर लिया, 4 RC कर लिया, 30 मिनट निकल गए. अब क्या करें, 10 मिनट में 8 क्वेश्चन देख के डर लगता है कि अराउंड 1 मिनट 7.5 सेकेंड्स इज देयर फॉर ईच क्वेश्चन, राइट? बट वहीं पे अगर तुम्हारे पास माइंडसेट ये रहेगा कि हाँ मेरे को 6 क्वेश्चन ही करने हैं, तो अराउंड 1 मिनट सेकेंड्स ऑफ, गाइस प्लीज म्यूट, अराउंड 1 मिनट 40 सेकेंड्स विल बी देयर फॉर यू टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन. और कुछ आरसी कैसे होंगे, Mridul, please turn off your video if you are not in an appropriate position. ठीक है, this is derogatory to the class, so please behave properly. Okay, so that's the case, guys, है ना? So let's start the session now. Again, I'll be switching off the video just because कि some of the people will be seeing the recordings, तो उस समय में ये नहीं आएगा. I'll be giving you 3 minutes of time, not 3 minutes now, 2.5 minutes of time to solve the question, and then we will be discussing. ठीक है? So here goes the question number 1 in front of you all. This is the odd one out. चिरी आना जरा. Ankit, please mute.
Okay, Vandana. Okay, Safi. Okay, Shivai. Guys, all of you should try to attempt these questions. Okay, Murli. Okay, Karthik. Okay, Harshita. Okay, Vinit. Others. Okay, Sushant. Last 30 seconds, guys. Okay, Mahendra. Okay, Rohit. हर्षिता देख, ये है तुम्हारे ओवर थिंकिंग का नतीजा। पहले तुमने सही आंसर दिया है, देन यू आर correcting it out, rectifying it out on, and you are marking the wrong answer. So VARC is all about sometimes instinct too. ठीक है, चलो देखते हैं, है ना। अभी देखो, प्लीज स्टॉप कमेंटिंग, राइट। नाउ सी व्हाट्स गिवन हियर इज C is likely to star in the Women King alongside Vivo Davis, a fellow Oscar winner. Okay, so it is talking about some co-star, I guess some heroine or someone, right? Actor, might be. In their exploration of myth, superstition, dreams, power, fear, and magical realism, these historical novels draw from the tradition of storytelling. So it is talking about some historical novel, right? And where they draw their contents from, right? Cool. Even before Black Panther became the highest grossing superhero movie of all time in America, Hollywood filmmakers were casting around for stories to hitch to the African bandwagon. So it is talking about something highest grossing superhero movie or something, and where they are trying to cast their heroes from or cast their stories from. So यहाँ से मेरे को लग रहा है कि 3-2 might be my connections, because these actors or directors, whoever they are, filmmakers, they are trying to explore the myth, superstition, etc., and they are trying to draw from the tradition of storytelling. अभी के लिए मेरे mind में यही चल रहा है. It is about some co-star set in West Africa and based on historical events surrounding an all-female military unit that fought to protect the kingdom of Bohemia from the French in the 18th and 19th century. The film was a potent mix of clear plot, black heroes, and as many gorgeous warrior women as you can shake a stick at. Now see, it is talking, 4 is talking about some movie, right? Some movie. And one has given me she is likely to star in the Women King. Women King is a movie. तो मेरे को ये दिख रहा है कि 1-4 might be my pair. Now coming to 5, Lupita Nyong'o, one of the stars of Black Panther, set in the fictional African kingdom of Wakanda, is an increasingly powerful Hollywood producer and looks set to be one of the first out of the blocks. Now see, it is talking about one co-star Lupita Nyong'o, right? And here it is saying about, मेरे को एक चीज पता चल गया था कि 4 and 1 might be my connection. And it is talking about Lupita Nyong'o, one of the stars of Black Panther. And here this C, this pronoun is denoting her. So I can say कि 5-1-4 is giving me a correction for sure. Now whether to select for 3 or whether to select for 2, it's an easy guess, guys. It's talking about the Black Panther movie and some of the movies, some of the plots that have already come earlier, or from where the filmmakers are trying to cast their stories from. So 3-5-1-4 is giving me a sequence and 2 is giving me the odd one out. And this was an easy question. Why an easy question? Just because we were able to connect the dots properly if you would have read each and every sentences correctly.
मेरे को यहाँ पे दिखा सी इज लाइकली टू स्टार इन द विमेन किंग, सी इज टॉकिंग अबाउट सम विमेन, विमेन किंग इज टॉकिंग अबाउट सम मूवी, यहाँ पे मेरे को मूवी मिल गया, यहाँ पे मेरे को 4 में मेरे को मूवी मिल गया, 5 में मेरे को विमेन मिल गई, राइट। और उसके बाद ये हाईएस्ट ग्रोइंग सुपर मूवी से पहले अमेरिका में जो है हॉलीवुड फिल्म मेकर्स वेयर दे वर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट दियर स्टोरीज फ्रॉम से कहानी शुरू हो रही है, एंड ऑब्वियसली टू कांट बी माय ओपनिंग स्टेटमेंट, right? So if I would have read that calmly, I would have marked this question with accuracy, and it was an easy question to attempt for. If anyone of you have any doubts, because most of you marked either 1 or 2, those who have marked those who have marked 2, great job done, guys. And Safi, if you don't remember this question, right, and if you have marked this so fast, kudos on that. That's a very good thing done. Good job done. Any doubts, guys? You can unmute and speak. Okay, सुशांत, ठीक है, टाइपो हुआ तो कोई नहीं, अगर 2 मार्क कर रहा था तो ठीक है, क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर गोज क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा बड़ा है, ऑब्वियसली मेरे को जगह नहीं मिल रहा था, है ना, तो मैं क्या करता, जस्ट रीड दिस वन देन, हाँ अभी ठीक है, ये इससे ज्यादा दूर जाएगा। It's a summary question, guys. Exactly, yes. First look, me, you should leave this question. I'll talk about it, don't worry. If you have read the, I am moving it above. चल, ओके, कार्तिक, ओके, शिवाय, ओके, मुरली, ओके, वंदना, ओके, शाश्वत, यस, महेंद्र, ओके, सौरभ, ओके, विनीत, ओके, विक्रांत, अदर्स, ओके, हर्षिता, last 30 seconds, okay, Venkat,
चलो स्टॉप, ठीक है। अभी देखो गाइस, इस क्वेश्चन में मैं वीडियो ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि देन आई विल हैव टू इधर आई अदरवाइज आई विल हैव टू स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन, क्योंकि सामने में मेरे वो बड़ा सा स्क्रीन टाइप का आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं अपना वीडियो ऑफ रखता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है और ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शोकेस यू वन थिंग, ठीक है, वो करते हैं, उसके बाद आई विल शो यू। मैं अपना वीडियो भी ऑन कर लूंगा वंस आई लेट यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल द फैक्ट्स, ठीक है। तो लेट्स सी, origination is very important to bring about a communication. People with low imagination communicate mainly regarding subjects that are handed to them by external sources. So it is talking about people with low imagination and how they are communicating. They are communicating where they are forced by some external source. They wait for an exterior circumstance to bring about an interaction. Otherwise, they do not engage by creating a communication. They either have a compulsive, irresistible urge towards doing something or are inhibited and behave awkwardly and unnaturally in communicating. Right? So at some point of time, they have some urge, or at some point of time, they just behave awkwardly and unnaturally. If they manage to engage, they often turn sharply towards derailment of the dialogue. This is an obvious reaction if they are not interested, first thing, right, and bring about a good degree of resentment. So it is this factor of resentment to that is being there, ill will and unwanted conclusions. As a result, we can conclude that a pleasant and engaging conversation requires the participation of two imaginative minds with similar or balanced endowment or creative impulses to mutually create the art of communication. ठीक, तो यहां से मेरा क्या है, सबसे पहला चीज क्या है मेरा कि अनइमेजिनेटिव पीपल एंड हाउ दे कम्युनिकेट, right? They either don't interact or they have a degree of resentment, etc., etc., and they communicate only when they are pushed by some external sources. One primary argument of mine is this, right? Second primary argument is about that these ill will, unwanted conclusions, resentment, derailment of dialogues, etc., etc., is my secondary argument. Means second primary argument only. And third thing is that you need to have, if you want to have a purposeful communication, you need to have those people who have an imaginative mind, so that there can be a mutually good interest in communication, and you have that balanced communication that will give you some output for sure, right? Now coming to the options. So what you guys can see from this passage, first thing is, let me erase this one. Okay, so I'll mark it at the end. First, let me discuss the options. After that, I'll be marking. The people having difficulties with initiating a conversation are generally accustomed to pre-packaged amusements, right? We have never talked about these pre-packaged amusements. We have never talked about those who are having difficulty in initiating a conversation. They are indulged in other activities, or they are pre-packaged, they already have that pre-packaged amusements. So this is directly eliminated by reading line number 1. We don't need to go beyond this statement. Second, the people who do not originate a conversation or do not engage imaginatively are inherently dependent upon others to give them primal reasons to engage in a conversation. Perfectly fine. Till now, it has discussed this. This is due to being endowed with very little imagination. We can say that communication is the mirror of one's upbringing. Now, it is not saying anything about whether any people who is not communicating properly, there is a fault in their upbringingness. Nowhere it is being discussed. So that's why when as soon as I read this upbringingness, I'll eliminate this option. Right? People with option C says people with low imagination depend on external sources for creating a communicative interaction. Perfectly fine.
First sentence, more often than not, they may behave awkwardly while communicating. Okay, so here they are behaving awkwardly, but the thing is more often than not, ये मेरे कान को खटक रहा है थोड़ा सा अभी के लिए, right? कि whether he meant that he always behaves in such a way, he always behaves in such a way, or he seldom behaves in such a way. We are not gathering any conclusion from here. That's why अभी के लिए मेरे को ये word थोड़ा सा मेरे कान में चुभ रहा है. More often than not, they may behave awkwardly while communicating, but sometimes they may derail the dialogue, leading to negative emotions. Again, it is saying sometimes they may derail the dialogue. So that means at other times, they might not derail, but that is not the intention of discussion that is being presented by the author here. Right? So that's why leading to negative emotions. Communication needs the right balance of imagination and creativity. This line is fine to me. But as soon as I read this line and this line, खटकना मेरे को यहीं से शुरू हो गया था. यहाँ पे मेरे को लगा कि they may वाला बात है. He is talking about the probability. In this case, he is talking about the probability, but here he is giving the certainty. That's why option C will be eliminated. Option D says people with low imagination depend on external sources for bringing about a communicative interaction. Perfectly fine. First line, they may behave compulsively or awkwardly while communicating, or may derail the dialogue, leading to ill will and necessary interpretations. Okay, second line. Now you will say, let me erase this one थोड़ा सा. ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा इरेज कर देने दो. ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने क्या किया. नाउ व्हाट आई डिड, यहाँ पे मैंने पढ़ा कि they may derail the communication. I thought about कि it is talking about the certainty. I eliminated this option. But as soon as I went in option D, I saw people with low imagination depend on external sources for bringing about a communicating interaction. They may behave compulsively or awkwardly while communicating, or may derail the dialogue, leading to ill will and unnecessary interpretation. So यहाँ भी मेरे को था कि they may derail the dialogue, यहाँ भी मेरे को है they may derail the dialogue. उस बिहाफ पे तो मेरे को दोनों एलिमिनेट कर देना चाहिए था. अब मैंने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को तो सर्टेनिटी के साथ एलिमिनेट किया है, राइट? सो नाउ आई विल सी कि which is the option that is suiting us the most. And here, when I'll read it further, I'll see the art of communication requires the participation of imaginative minds with a balanced measure of great impulses. It is also talked here. Really confused between C and D? Then I'll read again C, what C says. People with low imagination depend on external sources for creating a communicative interaction, right? Here it is saying people with low imagination communicate mainly regarding subjects that are handed to them by external sources. So here it is talking about creating a communicative interaction. Here it is talking about that low imagination communicate may. So when you are giving them the task to communicate about something, then only they are communicating, right? And here they are saying that they are creating a communication interaction. They are creating that only when some external sources is saying them to do that. And in that sense, it will be a faulty statement. And that's why option D will be an easy statement to mark for, right? So अब देखो, ठीक है, हम लोगों ने ये वाला समरी तो कर लिया, right? Now think about it, है ना? देखो, मेरे पास समरी आया, बहुत बड़ा समरी था, टाइम नहीं था मेरे को दिमाग में लगा कि I'll get exhausted once I'll read this summary. इतना टाइम है, I'll have to attempt it or it will consume my 2 or 3 minutes of time for, मतलब easily, right? It might consume more than 3 minutes. But one thing that I saw was its plain language. When I was reading this, were there any jargons used?
Were there any difficult words used? No, it was plain, right? So I'll keep it as an option कि हाँ चलो मेरे को समझ में तो आ रहा है. Now what I need to do in this question, I just need to eliminate the options. I'll not be doing it for now, but yes, I'll be coming on this question for sure at the end. And you know what? All of you who have marked this answer, all of you have marked it correctly. So sometimes, obviously, जो तुम्हारा length of the passage है, it might intimidate you, but sometimes it becomes easy to communicate with the passage, and sometimes you, most of the time, if it's easy to communicate, if you are going on with the flow, you will be able to mark the answer properly. और इसमें तुम लोगों ने देख लिया कि एलिमिनेशन वाज सो इजी फॉर अस. ए बी सीधा एलिमिनेट था, सी डी मैंने पढ़ा, सी डी में मेरे को जो डाउट्स लगे मैंने एक एक करके ये करा, और डी को मेरे को एलिमिनेट करने का कोई रीजन दिख नहीं रहा था. सी में मेरे को एक दो चीजें थी जो चुभ रही थी. अगर मेरे को क्लियर कट पता नहीं भी चलता तो मैं अपने इंस्टिंक्ट पे जाके मार करके आगे बढ़ जाता. ठीक है, किसी को कोई डाउट्स? सर आई हैव अ डाउट. या इसके बोलो. अंदर जो हमने सी और डी में डिफरेंस देखा है वो यही है ना कि फर्स्ट लाइन के अंदर लाइक क्रिएटिंग अ Exactly. कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन और कम्युनिकेटिव मतलब ब्रिंगिंग अ कम्युनिकेटिव. हाँ, ओके, आई थॉट दैट दिस इज द सेकंड लाइन जो नहीं. डिफरेंस. सेकंड लाइन दोनों में सेम है. ओके ठीक है, ओके ओके. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. ओके आदित्य, ओके वंदना, ओके रोहित, ओके मुरली, ओके महेंद्र, ओके विक्रांत, मुरली, वंदना check your answers. Mahendra check your answer. Vineet check your answer. CY check your answer. Okay, Saurabh. Okay, CY, check your answer again. Okay, Venkat. Okay, Vineet, check your answer. Last 1 minute, guys. Harshita, check your answer. Mahendra, again, check your answer.
साक्षात ओके स्टॉप एक सेकंड रुक जाओ मेरे को देख लेने दो अंकित अनन्या वेयर आर योर आंसर्स गाइस why you guys are not answering I'm not sure Vitisri okay Naresh Radhika why are you not answering beta Safi where is your answer of this question Sushant Realme pad whoever he or she is देखो गाइस अगेन ऑड वन आउट करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है पता है? मेरे को कभी लगता ही नहीं है कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस ऑड वन आउट हो सकता है. दैट्स अ बायस्ड माइंडसेट. हम लोग फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को जनरली प्रेफर करते हैं कि हाँ इट माइट बी देयर. व्हेन यू रीड दैट, as soon as you read the first thing, it's a normal thing. I'm not saying it's for a biased approach. It's a normal thing कि whenever we read something na, after the first sentence we try to communicate the RC or passages or something paragraphs that's given there, right? Once we have read the first, उसके बाद we try to connect the dots कि first से dots किसके किसके connect होते हैं. It's a normal natural phenomenon. But in odd one out, when you are attempting the odd one out questions, what you should do is have a neutral approach towards each and every statement. Just read the statement. If you are able to get the link, it's okay. If you are not able to get the link, don't try to justify the link inappropriately. Got that? For example, let's see in this question. Ida Adamarian, the wife said, tell. Okay, Ida Adamarian's The Wife's Tale might be a novel, right? In which she savors her grandmother's life, which is a life scented with ginger and garlic, cardamom and basil, which spans emperors, revolutions, invasions, conquests, and liberation. So it is talking about her grandmother's life, right? And the influence of these ginger, garlic, cardamom, etc., etc. Perfect? Cool. It extends beyond the warm flavors of ginger and cardamom that spice the languidly served stews. Now, you know what? Why I was talking about this? Once you had read that statement to one, and once you have a biased approach, now you are trying to connect the dots with one, two will give you a suitable approach to move forward. Why? It extends beyond the warm flavor. It is talking about, you will suit yourself with, it is talking about that wife's tale, that novel that's there. Okay, so this is when I, again and again, when I state that there is a biased approach that hovers around in the student's mindset, I'm talking about this mindset. ठीक है, तो हम अपने आप को जस्टिफाई करने, अच्छा वाइफ टेल था और इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द वार्म फ्लेवर्स ऑफ जिंजर, जिंजर के बारे में बात कर रहा है, फिर बोल रहा है कि ये उससे आगे भी बढ़ रहा है. सो यहाँ से हम लोग डॉट्स कनेक्ट करने लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने वन को माना है कि वन तो मेरा होगा ही होगा. नहीं, न्यूट्रल अप्रोच के साथ चलते. मैंने पढ़ा, अभी मेरे को डॉट नहीं मिला या मिल गया, ठीक है, देखते हैं. अगर 1-2 का डॉट मेरे को मिल गया, लग रहा है, परफेक्ट, I'll be going forward with that. It extends beyond the warm flavors of ginger and cardamom that spice the languidly served stews. Best of all is the whiff of green coffee beans roasted in a cast iron skillet which is carried around in the table to give each guest a full measure of its aroma. There is also the tactile joy of tearing and rolling injera, a spongy and bubbly flat bread, before using it to mop up sauces. So all these are talking about a kind of dish, right? All these are talking about the kind of dish, aroma coming out from that dish, etc., etc., spongy and bubbly flat bread, whiff of green coffee beans roasted in a cast iron skillet. It extends beyond the warm flavors of gingers and cardamom that spice the languidly served stew.
5 says a home cooked Ethiopian meal is a sense word. So now I have introduced, as soon as I read 5 now, I thought, okay, I have introduced something, and that is, it is about that Ethiopian meal. Every meal has some sort of gingers, garlic, etc., etc. But the author is trying to elaborate the concept with some more adjectives. And that is what he is trying to say when he's saying it extends beyond the warm flavors of ginger and cardamom. So here this, it is trying to denote this Ethiopian meal. ठीक है, तो मेरे को यहां से क्या दिख गया कि 5 is talking about something, it is 2 is talking about the thing that is Ethiopian meal, and 3 and 4 is trying to say you about the aroma, about the food that's present in the Ethiopian meal. So 5 to 4, अब यहाँ पे मैं connections नहीं बनाने लग जाऊंगा, because it is stating the same statements again and again, or it is talking about her grandmother. The main focus is on her grandmother and her lifestyle that was based on some ginger etc वाला चीज. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं कि इथोपियन मील के बारे में, उसके बारे में एडजेक्टिव बताया, फिर सॉसेज वगैरह क्या कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें बताई गई. 1 सेकेंड, क्लास में है, ठीक है. तो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, मेरा ये 5 2 3 और 4 मेरे को कनेक्टिंग लग रहा था, राइट. 1 इज एन ऑड वन आउट. ठीक है. नाउ दोज हु हैव मार्क्ड 5, तुमने 5 क्यों मार्क करा पता है तुम्हें? जस्ट बिकॉज तुम्हारे माइंड में पहले ही था कि 1 तो मेरा है. तो बस यही दिक्कत होती है. न्यूट्रल अप्रोच के साथ जाओ, दिक्कत नहीं आई. न्यूट्रल अप्रोच जैसे ही खत्म करोगे, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी भी. एंड इट वाज अ मॉडरेट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट. इजी अगर if you have a lucid mindset, if you are reading one by one each and every statement, trying to connect the dots, but in general it was a moderate question. Next question guys, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ओके सफी,
Sorry, Safi, I guess you might have answered in the last question. No, this question. Last question, yeah. Okay, Vandana. Okay, Karthik, Aditya, Murli, Rohit. Okay, okay, Vikrant. Okay, Ananya. Okay, Shivai. Okay, Mahen. Check karo. I am telling you guys. Those who need to check the answers. Vandana, check your answer. Karthik, check your answer. Aditya, Murli, Itisri, Naresh, Vinit, Sivai, Ananya, Saurabh. You guys check your answers. Mahendra, yours is cool. Harshita, check your answer. चलो देखते हैं लास्ट 30 seconds guys. चलो देखते हैं है ना. यहां पे मेरा क्या है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट सेज इज it would seem despite jobs undisputed legacy as a global icon, neither public spaces nor even technology innovation industry awards prizes have really memorialized him to the extent one would have expected, right? Reasons for this may include a political bias. Most countries still have a bias in naming public spaces streets after political leaders, just like India does. A nationality bias. Most countries prefer memorializing their own prominent citizens, not foreigners. On an anti-business bias, even in the West and certainly elsewhere, businessmen or CEOs or entrepreneurs still invoke mixed feelings at popular levels. Officials are hesitant to be seen naming public spaces after people who are seen to have accumulated private wealth. So this passage, those who have answered, हाँ अनन्या अभी परफेक्ट है बच्चा. अदर्स चलो मैं बताता हूँ है ना. आई विल बी टेलिंग यू गाइस क्या करेक्ट आंसर हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. डिस्पाइट बीइंग अ ग्लोबल आइकन, few public spaces, technology or industry awards have memorialized jobs, possibly owing to political, nationality or anti-business bias. Okay, so it is talking about ki jobs is a global icon, undisputed legacy as a global icon. Perfect. None of the few means almost none. ठीक है, it's around zero. ठीक है, few का मतलब होता है negligible. So almost none of the public spaces, technology or industry awards have memorialized jobs. ठीक है, so this is covered. Possibly why? Because of these biasness that are there prevalent, right? So it is considering all the statements. So I don't have any perfect reason to eliminate this as of now. So I'll keep this one. Though Jobs is recognized as a global icon, there are very few memorializations of him. Galat. Very few memorializations. Misrepresentation. Cool. Political, nationality and anti-business biases. सर कैसे मतलब very few memorialization कैसे गलत है? यहाँ पे देखो ना कहाँ पे दिया है, neither public spaces nor even technology innovation industry awards prizes have really memorialized him. सर
हम few को consider कर रहे हैं और very few को consider नहीं कर There रहे is a हैं। difference, बच्चा. There is a difference ना few and very few में. Few हाँ means वही very almost very few और कम नहीं हुआ। very few means you are talking about some of them they have represented it out. Few means almost none of them have represented. So there is a difference between both the statements. So few is lesser than very few। Obviously yes. Few means almost none. ठीक है सर। ठीक है. Very few means some. ठीक है. Political, nationality, and anti-business biases around the world have prevented the honoring of Jobs, who is an iconic figure in technology and innovation. Now see guys, what is stated here is, would have expected reasons for this may include a political bias. So again, it is talking about the probability kind of thing. But Ananya and those guys who have marked option C, again, you are saying that if these biasness have prevented. So you are again talking about the certainty वाली चीज. और यहाँ पे ये बोल रहा है probability वाली चीज. That's why this will be eliminated just because have prevented. Might have prevented if they would have given this. You might have gone for 1 and 3 too. कि 3 में भी confusion होती कि whether we should opt 3 or whether we should opt 1. अभी तक के लिए we have not read 4 yet. But as they said कि they have prevented, there is a probability. Here it is talking about that there is a certainty, and that's why option C will be eliminated. Option D says Jobs' business success attracted political, nationality, and anti-business biases that resulted in the very few. Again, it's a misrepresentation because it is prevalent there. ऐसा नहीं है कि जॉब ही आया तो ये सारी चीजें जॉब का सक्सेस आया, तो ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि जॉब के सक्सेस के कारण ये सारी बायसेस आ गई हैं. But D says कि as soon as job got success, these biases became prevalent in the society. And that's why option D will be eliminated. सर हाँ. डी में जो लिखा है वो लास्ट लाइन से मैच नहीं करेगा कि नेमिंग पब्लिक प्लेसेस आफ्टर पीपल हु आर सीन टू हैव accumulated private wealth. Success can be related to accumulation of private wealth. तो Jobs' हाँ. business success attracted political, nationality, and anti-business biases that resulted in the very few notable memorialization of jobs around the world. ठीक है. Again वो भी आएगा. मैं वहां तक जाऊंगा क्यों? अच्छा, मैं यहाँ तक जाऊंगा क्यों? मेरे को यहीं पे दिख रहा है कि नहीं होगा. ठीक है सर, फाइन. और अगर तुमको ये वाला चीज भी वेरी एप्ट है, वेरी वैलिड पॉइंट है कि ये वेरी फ्यू मतलब सम, जबकि यहाँ पे ऑलमोस्ट नन दिया हुआ है. या कहीं पे बोला ही नहीं गया कि कुछ लोग उसको रिवार्ड किए भी है. राइट. सो दैट्स व्हाई कंसीडरिंग ऑल दिस बी, C and D, we would have eliminated option 1 was correct. Easy question guys. Easy to eliminate, easy to read. एक एक चीजें पढ़ते, अगर सारी चीजों को, सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्सेट्रा को अच्छे से पढ़ा होता, इजी टू डू. नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके शाश्वत, ओके शिवाय.
Okay, Aditya. Okay, Vandana. Itisri, just read the question, bacha. Murli Krishna, just read the question. Whether it's a 5 sentence, देखा नहीं कि odd one out पे टूट पड़ा. Question पढ़ लो यार. Okay, Karthik. Okay, Safi. Okay, Vikrant. Vikrant, ज्यादा टाइम ले गया. इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था. Okay, Ankit. No, Venkat, check your answer. अनन्या बच्चा ज्यादा टाइम ले गई. इतना टाइम नहीं लगता. No one knows, Aditya. No one knows. अपने अपन ने इसीलिए 4 भी करा है, 5 भी करा है. क्या डाउट है इसमें विक्रांत? चलो स्टॉप. ठीक है. गाइस बिफोर मूविंग टू द दिस, अच्छा चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा. ठीक है. What is given here is decide on the proper order for the sentences and key in this sequence of 5 numbers as your answers. ठीक. Easy. Finally, in the telogen phase, the follicle goes into rest mode for several months until the hair falls out. Okay. So it is talking about finally in the telogen phase. So it is talking about hair ki cheezein, telogen phase, that might be the last phase, etc., etc. First hair grows and gets longer in the anagen phase, which can go on for several years. So it is again talking about the hair growing procedure. Okay. And it is an anagen phase. Then the process starts anew. अरे डोंट बी सॉरी यार, हो जाता है, बट ट्राई टू देखो. अभी तुम्हारा आंसर सही आ गया है तीसरी, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ना. और 3 मार्क्स देके जा रहा है, देखो इजी क्वेश्चन है. आई डिस्कस दिस आउट, देख लेना, है ना. डोंट बी सॉरी अबाउट, चलता है. एक आध क्वेश्चन गलत हो गया तो ठीक है. ठीक है. देन द प्रोसेस स्टार्ट्स अन्यू. सो इट इज टॉकिंग अबाउट देन द प्रोसेस स्टार्ट्स अन्यू. मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई एक मेरा जो है ना वो फाइनल स्टेटमेंट होगा, क्योंकि कोई एक प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद बोल रहा है कि जब ये प्रोसेस खत्म हो गया तो फिर से द प्रोसेस स्टार्ट्स अन्यू. तो माइट बी, इट माइट बी माय कंक्लूजन अभी तक मेरे को जो लग रहा है. Then during the 10 days catagen phase, hair stops actively growing and separates from its follicle, which is what holds the hair in place beneath the skin. Okay, so it is talking about during the 10 days catagen phase. Then during the 10 days catagen phase, that means it must have discussed any phase before this, right? Our hair grows in a cycle with 3 distinct phases. ओके, तो 3 डिस्टिंक्ट फेजेज की बात हुई. पहला फेज कौन सा था? एनाजन फेज. देन इट एंटर्ड इनटू द कैटाजन फेज. देन फाइनली इन द टेलोजन फेज. एंड व्हेंस इट इज कंप्लीट द प्रोसेस स्टार्ट्स अन्यू. सो दैट्स व्हाई 5 2 4 1 3. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. राइट. Should we move to the next question, please? Here, good question number next.
Okay, Rohit. रोहित बच्चा, योर एक्यूरेसी इज गुड इन वीए, मैंने पहले भी सेशंस में देखा है। और अपनी सिस्टम पे वीआरसी में खेलना बचाओ। परफेक्ट सिवाय। ओके, 83 विक्रांत, परफेक्ट विक्रांत, परफेक्ट आदित्य, नो इति। बच्चा एक बार चेक कर। ओके अनन्या, बच्चा एक बार चेक कर, अनन्या गलत है। परफेक्ट मुरली, कार्तिक अगेन यू नीड टू चेक। अंकित परफेक्ट, सफी परफेक्ट, वंदना परफेक्ट, विनीत परफेक्ट। चल देखते हैं, है ना। एनीवन ट्राइंग, स्टिल ट्राइंग? परफेक्ट अनन्या भी सही है बच्चा। सौरभ नो, महेंद्र नो। ठीक है, देखो देखते हैं। फोर, मेरे को क्या दिया है कि ऑड वन आउट, राइट। इट एडवर्सली अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, ड्राइव्स अ वॉलंटरी टर्नओवर। It adversely affects productivity, drives a voluntary turnover, and costs US employers nearly 200 billion every year in healthcare costs. Okay, so it adversely affects something, किसी चीज के बारे में बात हो रही है और जिसके कारण US employers are costing a huge amount. For many years, a number of researchers have touted the benefits of better work practice for performance and productivity. So it is talking about the practice, better work practice that needs to be there. Better work practice that needs to be there. Right? After that, workplace stress is exacting an even higher physical and physiological toll. Okay? So it is talking about workplace stress. Right? Efforts range from initiatives to encourage sleep, exercise, and meditation to perks such as nap pods and snack bars. Okay. Many companies are aware of these negative effects and some have gotten busy devising ways to counteract them. ठीक है, अब यहां से देखो, मेरे को सबसे इजी चीज क्या मिल गया कि जिन लोगों ने 3 मार्क करा है, जस्ट सी। मेरा, अगर तुम लोगों को और कुछ भी समझ में नहीं आए तो ये किस चीज के बारे में बात हो रही है पहले वो सोचो। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा मैं अच्छे चीजों के बारे में बात करूंगा, ठीक है, तो मैं बुरे का एग्जाम्पल क्यों दूंगा? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मतलब अच्छी, मतलब those companies who don't have any work stresses related problems etc, they are doing good. So I'll give the example in good sense. Now why will I be giving the example in bad sense? First thing, right? Now see what is here. In most of them, what are we seeing? That many companies are aware of these negative effects. So it is talking about the negative effect. What is the negative effect that we are discussing in this whole paragraph? Workplace stress, first thing, right? So I can say ki mera 3 and 5 might be related, and to counteract them, the efforts are ranging from encouraging sleep, exercise, meditation to perks such as nap pods, etc. So 5 and 4 might be connected, and it is connected, not might be, it is connected, and we are talking about the workplace stress, है ना? 2 says
कि the benefits of better work practices. So it is talking about benefits of better work practices, and it is saying it adversely affects productivity, drives up voluntary turnover, and cost US employers nearly $200 billion. So it is affecting productivity. That means we are talking about something negative, and that negative thing is workplace stress, and this it is signifying this. So that's why 3-1 is connected, 5 is connected, after that 4 will be, sorry, 3 1 5 4 will be connected, and 2 will be my odd one out. जिसको जिसको जिसने भी रॉन्ग आंसर्स मार्क किया था, जो भी डाउट्स है पूछ लो. किसी को डाउट्स है तो पूछ लो गाइस. क्लियर है सबको? अनन्या क्यों मार्क की थी रॉन्ग? पता नहीं हो गया था शायद. ठीक, चलो नेक्स्ट प्लीज. जिन लोगों ने भी मार्क किया था, अगर डाउट है गाइस तो पूछ लो, दैट्स नॉट एन इशू, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. ओके वंदना. ओके आदित्य. Mahendra, check your answer. Okay, CY. Harshita, check your answer. जो समझ लो इंटरप्रेट कर लो, है ना आदित्य. पर ऐसे मिस्ट्री में डाल देते हो ना थोड़ा, एक 1.5 मिनट के लिए. अच्छा, सही है कि नहीं है. मुरली, check your answer. Last 1 minute, guys. Vikrant, check your answer. Ananya, check your answer. Murli, check your answer. चलो स्टॉप गाइस. ठीक है, देखो सबसे पहले दिया हुआ क्या,
परफेक्ट विक्रांत, अभी ठीक है। वेंकट चेक सी गाइस, स्टॉप टाइपिंग चैट। अनन्या नहीं बच्चा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब रुक जाओ, आप कोई चैट में मत लिखना, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स गिवन हियर, archaeologists have unearthed Mancala like game boards made of stone in Jordan dated to 6000 BC. So this is talking about some game board, ठीक है, that has been found, that has been unearthed. Perfect, ठीक है। The ancient Egyptian board game Sinet represented the passage of the ka to the afterlife. Its name is commonly translated as the game of passing. So it is talking about some ancient Egyptian board game Sinet, and that represented what? Right? The application of games to serious matters has probably been with us almost as long. Okay, so it is telling that application of these games in serious matters is also there. Mistaking games for reality is ultimately mistaking map for territory. So it is talking about if you are mistaking games for something, if you are mistaking games for something, you are mistaking maps for territory. It is comparing games with maps. Okay, perfect. Games are probably as old as the human species itself. Now it says we have kind of introduced the thing like games. Okay, they are probably as old as the human species itself. Now, if it is talking about some time dimensions, time frame, कि ये बहुत पहले से है, इतने पहले से है जितने पहले से कि ह्यूमन स्पीसीज है, तो अब मेरा सबसे अगला चीज क्या होगा? जब मैंने ये सारे पढ़ रखे तो मेरे को कहीं ना कहीं टकराया है कि देयर इज सम डेट दैट इज मेंशन्ड, एंड दैट डेट इज व्हाट? Archaeologists have unearthed Mancala like game boards made of stone in Jordan dated to 6000 BC. So I am saying that they are as old as the human beings itself. And I am giving you just one example of it. One game has been invented, one game has been found from the Jordan that was dated to 6000 BC. Right? So that means 5 and 1 are interlinked with each other. Okay? Now see. Now, the ancient Egyptian board game Sinet represented the passage of the ka to the afterlife. Its name is commonly translated as the game of passing. So that means one game is trying to represent the afterlife, and 3 is talking about the application of games to serious matters has probably been with us almost as long. As soon as I read this almost as long, means it is again comparing some time frame, and that time frame is what? That time frame is 6000 BC. हमारे पास ये चीज भी है, उसी टाइम से हमारे पास ये चीज भी है, राइट? तो जब मैंने बोला कि गेम की हिस्ट्री मेरे पास बहुत पुराने समय से है, 6000 साल पहले मेरे को एक गेम दिखा था जो कि बोर्ड लाइक गेम था, ठीक है, और गेम्स का कैरेक्टर सिग्निफिकेंस जो है उतने ही लंबे समय से सीरियस मैटर्स में भी दिख रहा है। अब वो सीरियस मैटर कौन सा है? तो आफ्टर लाइफ को भी गेम रिप्रेजेंट करता है। एंड 4 इज टॉकिंग अबाउट कि अगर तुम गेम के मिस रिप्रेजेंटेशन को ले रहे हो तो दैट इज समथिंग लाइक कि तुम किसी टेरिटरी के मैप के को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो। इज इट रेलिवेंट? राइट? सो दैट्स व्हाई अगर डॉट्स कनेक्ट करना था मेरे को, यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं करना था। अगर मैं ये देखता कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ क्या देखना था? सीरियस मैटर्स। यहाँ पे है सीरियस मैटर्स। व्हाट आर दी सीरियस मैटर्स? दी सीरियस मैटर्स आर आफ्टर लाइफ वाला चीज। और यहाँ पे मेरे को दिखा था कि एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीसीज, तो ह्यूमन स्पीसीज 6000 BC से, उस समय से मेरे को ये चीज दिख रही है।
तो मैं 5 और 1 का डॉट्स मान लेता, 4 और 2 का डॉट्स था मेरा, मतलब 3 और 2 का डॉट्स था, और 4 मेरा ऑड वन आउट हो जाता अगर पीजे में कर रहा होता। और ये मान लो कि अगर 1 2 3 और 5 मेरे पास रहता है जब पीजे, तो मैं यहाँ देखता कि दिस इज टॉकिंग अबाउट 6000 BC, और एज लॉन्ग इज टॉकिंग अबाउट द सेम टाइम फ्रेम दैट इट इज ट्राइंग टू टॉक। So that's why मेरा connections क्या हो जाता, 5 1 3 2 would have been my connection, और 4 will be my odd one out. Moderate question. Why not easy? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि mistaking games for reality is ultimately mistaking map for territory. ठीक है, जब तुम यहाँ पे sometimes it happens in mind कि मैं बोल रहा हूँ कि सीरियस मैटर्स को हम लोग डील करना चाहते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग सीरियस मैटर को डील करना चाहते हैं तो दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि अच्छा सीरियस मैटर का मतलब है कि अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट गलत ढंग से कर लिए तो ये उस तरह से हो रहा है कि हम लोग एक कंट्री के मैप को ही गलत ढंग से रिप्रेजेंट कर लिए, राइट। और इस कारण से वो सीरियस मैटर का कंपैरिजन वहां से निकल जाता है, 3 और 4 को हम लोग एसिमिलेट कर देते हैं, लेकिन वी आर इग्नोरिंग दिस वर्ड देन एज लॉन्ग, जो कि इग्नोर नहीं होना चाहिए। And that's why it's a moderate question, not an easy question. किसी को डाउट्स है तो पूछ लो, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। Murli, check your answer. Ananya, check your answer. तीसरी, check your answer. रोहित डांट खाएगा बच्चा, तारा जंबल्स में ऑड वन आउट करेगा तो डांट खाएगा। महेंद्र, check your answer. Aditya, check your answer. तेरा वो स्टार्टर ही गलत है रे अनन्या, तो स्टार्टर में
दोनों जगह तो स्टार्टर में वही फंसी है, इसलिए मैंने तेरे को बता दिया। आदित्य चेक योर आंसर बच्चे। मुरली चेक योर आंसर। ऑलमोस्ट करेक्ट मुरली, ऑलमोस्ट करेक्ट। बस यू नीड टू फिक्स द स्टार्टर, दैट्स इट। विनीत परफेक्ट बच्चा। नो हर्षिता, महेंद्र नो, शाश्वत नो। लास्ट 1 minute guys. Safi almost correct, but yeah, not correct. सिवाय पानी दे जा प्लीज भाई, प्यास लग रही। वंदना परफेक्ट बच्चा। अमर को बोल दे, अमर दे देगा। दो चलो। सेकंड, 2 सेकंड। हाँ अमर को बोल दे, अमर दे दे, है ना। देखो देखते हैं गाइस, स्टॉप। अब प्लीज डोंट, नहीं अंकित, 83 नो, 83 ऑलमोस्ट करेक्ट, बट देखते हैं, है ना। यहाँ देखो, दो बार टू कहां से ला रही है? नहीं अभी भी थोड़ा गलत है, ठीक है। अभी तुम्हारा क्या है, द फर्स्ट anger or its cousin, annoyance, frustration or irritation always bubbles beneath the surface, ठीक है। However it manifests, passive aggression is the fine art of being angry without seeming angry, ठीक है। 1 second please, thank you भाई। guys just give me 1 minute, पानी पी लो थोड़ा। हाँ देखो, अभी क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, द फर्स्ट एंगर और इट्स कजन एनवाइंस, frustration or irritation always bubble beneath the surface. However, it manifests, passive aggression is the fine art of being angry without seeming angry. तो मेरे को सबसे पहला क्या लग रहा है कि however it manifests might not be my starter, but it is trying to introduce something to that is passive aggression. That is the fine art of being angry without seeming angry. Okay. But trying to suppress anger is like trying to keep a lid on a pot of boiling water. अब यहाँ पे मेरे को एक चीज दिख रही है, ठीक है, कि but trying to suppress anger is like trying to keep a lid on a pot of boiling water. Always bubbles beneath the surface. Something is bubbling beneath the surface, but if you are keeping it inside the surface, it is like trying to keep a lid on pot of a boiling water. It is trying to give you the comparison between the two things. अभी तक मेरे को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। There are two ingredients to such indirect expression of hostility, anger and avoidance. Now ये वर्ड जो है ना अनन्या, जो लोग, अनन्या नहीं, जो जिन लोगों ने भी 4 से स्टार्ट करा था, मेरे को लगता है बस उसी ने करा था जहां तक मेरे को दिखा है, राइट। तो अभी क्या है कि तुम्हारा अगर ये वाला वर्ड देखते हैं हम लोग,
कि there are two ingredients to such indirect expression. बस इस word के कारण 4 will not be my starter because it's not a general statement, because it is signifying something. Such indirect expression is trying to signify something. ठीक है, तो देयर आर टू इंग्रेडिएंट्स टू सच इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन के कारण ये मेरा ओपनर नहीं बनेगा। अभी तक मेरे को ओपनर कौन सा लगा है कि पैसिव अग्रेशन मेरे को एक ओपनर लग रहा है अभी तक, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग। अवॉइडेंस इज अ वे टू अवॉइड कंफ्लिक्ट, अवॉइड फीलिंग जेन्युइन एंगर एंड अवॉइड having to be direct in a situation where one feels capable. So it might be my starter, but अगर मैं इसको स्टार्टर मानता हूं तो 4 बोल रहा है कि देयर आर टू इंग्रेडिएंट्स टू सच इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, एंगर एंड अवॉइडेंस। मैंने अवॉइडेंस को अभी तक कुछ सिग्निफाई करा ही नहीं है, तो मैं अवॉइडेंस के बारे में बोलना शुरू कैसे कर दूंगा? दैट्स व्हाई दो इट इज अ जनरल स्टेटमेंट बट इट विल नॉट बी माय स्टार्टर। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया? 2 is my opener for sure. So when 2 is my opener, what 2 says is कि there are two, however it manifests, passive aggression is the fine art of being angry without seeming angry. Now it is talking about this passive aggression, है ना? Again, 4 talks about there are 2 ingredients to such indirect expression. What is that indirect expression that it is denoting? It is denoting that passive aggression, right? तो मैं 2 से कहा गया, मैं 4 पे गया। अब 2 ingredients are there. First ingredient is anger, right? And second ingredient is avoidance. Now always bubbles beneath the surface, but if you are keeping it down, it's like keeping a lid on the pot of a boiling water. So that means 1 3 is making a connection, right? 2 4 का मैंने पेयर निकाल लिया था, 1 3 5 will be my answer. किसी को डाउट है तो पूछ, जिनका जिनका गलत हुआ था क्यों गलत हुआ था, या कोई डाउट है अभी भी तो पूछो। सबका क्लियर है? क्या बात है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। समरी। Check your answer, Murli. Check your answer, Iti. Successfully ignored the question mark.
क्यों सर? समझ जा। ठीक है सर। Vandana, check your answer. Karthik, check your answer. Ankit, check your answer. Last 30 seconds, guys. चलो देखते हैं, है ना। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें भी मेरे को वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। हाँ इसमें भी नहीं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। क्या दिया है कि अ शॉर्ट पैराग्राफ इज फॉलोड बाय 4 समरीज, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द ऑथर्स पोजीशन। Animal's spirit is the colorful name that kings gave to one of the essential ingredients of economic prosperity, right? Confidence. Economic prosperity, that is confidence. According to kings, animals' spirits are a particular sort of confidence, naive optimism. He meant this in the sense that for entrepreneurs in particular, the thought of ultimate loss, which often overtakes pioneers as experience, undoubtedly tells us and them is put aside as a healthy man puts aside the expectation of death. ठीक है, एक बार मेरे को पढ़ने दो यार, कुछ पॉइंट गलत पड़ गया। हाँ ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया है कि सबसे पहले इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट एनिमल स्पिरिट, अ टर्म कॉइन्ड बाय किंग्स, है ना, राइट। अब यहाँ से ऑप्शंस पे आते, उसमें क्या है कि इट इज टॉकिंग अबाउट दैट नाइव ऑप्टिमिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा। ही मेंट दिस इन द सेंस दैट फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन पर्टिकुलर, thought of ultimate loss which often overtakes pioneers as experience undoubtedly tells us and them is put aside as a healthy man, puts aside the expectation of that. That means if there is something they see as loss, they will neglect that out, right? They just put them aside, just like a healthy man puts aside the expectation of death. Okay, means they will not ponder too much over that, right? Now see the options. Animal's spirit is the name that kings gave to naive optimism, a spirit that is essential to economic prosperity, one that characterizes entrepreneurs and pioneers, right? Now it is means ignoring one very fruitful explanation to the terminology coined by kings, that was animal spirit, right? It is not talking about what, it is not talking about this colorful name that kings gave to one of the essential ingredient of economic prosperity, that is confidence. This is the key takeaway from this passage paragraph, and it is not mentioned here. This confidence wala thing is not mentioned here. That's why option A will be eliminated. Option B, animal spirits is the name that kings gave to the particular type of confidence shown by entrepreneurs and pioneers even in the face of potential loss. Now it is again not talking about this very key terminology, that is naive optimism, right? Here एक मिनट में कोई इरेज करने दे इसको, थोड़ा सा मेरे को समझाने दो। हाँ देखो अब इसमें क्या है
कि ये second says animal spirits is the name that Keynes gave to the particular type of confidence, right? Okay, so it is talking about particular sort of confidence, that is naive optimism. He is talking about this, shown by entrepreneurs and pioneers even in the face of potential loss. Now it is not talking about this thing. He meant this in the sense that for entrepreneurs in particular, thought of ultimate loss, which often overtakes pioneers, are put aside by them, right? It is talking about कि they show the confidence, but in the wake of what they are showing this confidence, and what if the circumstances change, they are often ignoring some of the things, that is कि some unwanted things might happen. These are often ignored by the successful entrepreneurs just on the basis of that naive optimism, company with the going concern वाली चीज कि हाँ सब कुछ सही होता रहेगा, right? That point is not discussed here, so that will be, hence we will be ignoring this fact. C says, according to Keynes, animal spirits, a vital ingredient of economic prosperity, is a sort of confidence that entrepreneurs and pioneers show even at the prospect of ultimate loss. So this वाला concept जो है कि animal spirit, a vital ingredient of economic spirit, economic prosperity, that is confidence. This is scattered here. They are showing them even when they are facing the loss, right? So it is covered here. अब मैं देखूंगा B और C में difference क्या है. थोड़ा सा मेरे को इसको भी फिर से इरेज करने दो, ठीक है? B और C में देखो difference क्या है. What B is saying, B is suggesting is the name that Keynes gave to the particular type of confidence shown by entrepreneurs and pioneers even in the face of potential loss. They are showing this even in the face of potential loss on the basis of what? On the basis of that company with the जो अभी मैंने बोला, company with the going concern वाली चीज कि मेरा सब कुछ सही होता जाएगा, वो confidence मेरे अंदर में है, ठीक है? That optimistic approach, Keynes have coined the term animal spirit, that everything will be fine. In the long run, everything will be fine. And that's why if I'm considering even in the slightest of my mindset, I'm considering that something might not go well, I'm keeping that aside. Just because on the basis of that confidence that there and optimism that is inherent inside me, that everything will be fine. So there are two key takeaways from here. One is your confidence. Second is your optimistic approach. 2 is not talking about that optimistic approach. 2 is talking about confidence. 1 is not talking about that confidence. And that's why 1 and 2 will be eliminated. Right? Now it is showing, according to Keynes, a vital ingredient of this is a sort of confidence that entrepreneurs and pioneers show even at the prospect of ultimate loss. So that means what they are showing some of the things कि चलो ठीक है लॉस हो गया, फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये चीज मेरा अच्छा हो सकता है, राइट? तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे मेरी दोनों चीजें काम कर रही है, एक मेरा ऑप्टिमिज्म भी है, एक मेरा कॉन्फिडेंस भी है, जो दो चीजें वो बोल रहा है, राइट? तो राइट नाउ आई विल बी कीपिंग इट एज माय वन ऑप्शन. Coming to 4 says animal spirit according to Keynes is a type of confidence shown by entrepreneurs and pioneers even in the face of ultimate loss. This is essential for economic prosperity. Now ये उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया. मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज जरूरी है और उसके बेसिस पे मैंने ये चीजें लाई. ये क्या कर रहा है, ये चीजें आई हैं, दैट्स व्हाई ये चीजें जरूरी हैं. कन्वर्स मैं जो बोल रहा हूँ उसके कन्वर्स को ये बता रहा है. And that's why it is a distortion of the fact that I have presented in the paragraph. So option 3 will be the correct answer. अब पता चला आदित्य क्यों इग्नोर करा था अनन्या? हाँ सर. क्वेश्चन मार्क अनन्या तो पूरा क्वेश्चन मार्क दिए जाती है लगातार. मेरा क्यों करा था? वही तो आंसर सही थे तुम लोगों के, है ना? अच्छा तो साइड में बैठा है, पूछ लेता यहाँ पे. मैं अरे बताते दूसरे नहीं रूम में हूँ मैं दूसरे रूम में हूँ ना, वो दूसरे रूम में है, मैं दूसरे रूम में.
तो चीख देता भाई वहां से। सर क्या हाँ, कर बता रहे दो। हो? है ना, चलो गाइस आप नेक्स्ट, थोड़ी देर और नहीं करोगे, मैं फोन कर दूंगी अब। है ना, मैं जा रहा ग्रुप हूँ, कॉल देखो करना भैया, सबसे पहले ब्लॉक ग्रुप करने जा रहा मैं। ग्रुप कॉल करना भैया, मैं नहीं करूंगा। चलो बाय बाय, मेरे को चलो नेक्स्ट टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज 1 सेकेंड, तीसरी का एक डाउट था, मैं वो बता, अच्छा चलो मैं इसके तीसरी आई मतलब क्लास के बाद रुक जाना, मैं बता दूंगा देखो, है ना, मैं अभी तेरा चैट देखा। हाँ महेंद्र, चेक योर आंसर। हाँ अनन्या, वेरी गुड बच्चा, सही है, क्वेश्चन ही मत पढ़ो। महेंद्र, चेक योर आंसर। अनन्या, चेक योर आंसर। तुम लोग भी कंफ्यूज रहते होगे ना, सर के पास आंसर पहुंचा है नहीं पहुंचा है, क्या हो उनको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। ये एंटिसिपेशन तो बना रहना चाहिए ना विक्रांत मुरली, लास्ट तक। गलत बात तो, एवरीथिंग इज फेयर इन द बीए डिस्कशन आदित्य। लव एंड वॉर वाली बात अभी मैं करूंगा नहीं। चलो मार्क द आंसर गाइस, सीरियस नोट पे। Others, please attempt. Those who are not marking the answer. Karthik, check your answer, बच्चा। चलो देखते हैं, है ना। हाँ अभी ठीक है, कार्तिक अगेन चेक योर आंसर, चलो देखते हैं, राइट। अब प्लीज गाइस डोंट टाइप इन द चैट सेक्शन ना प्लीज, डिस्ट्रैक्शन होता है ना। देखो क्या है कि 4 आउट ऑफ 5 सेंटेंसेस मेरे को ऑड वन आउट निकालना है यहाँ पे, राइट। अब क्या है यहाँ पे कि दे गाइस, एक चीज प्लीज एग्जाम में यार 5 सेकंड लगा के क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ लेना यार, बहुत बुरा लगेगा वहां से निकलोगे पता चलेगा ऑड वन आउट है और तुमने पारा जंबल मार करके आया, पारा जंबल ऑड वन आउट मार करके आया, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग फूक के ना जाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि दे डोंट हैव अ सेफ प्लेस टू पुट देयर मनी सिंस 235 मिलियन ऑफ द वर्ल्ड्स फार्मर्स डोंट हैव बैंक्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि दे डोंट हैव अ सेफ प्लेस टू पुट देयर मनी सिंस दे डोंट हैव अ बैंक। मतलब क्या है कि फार्मर्स के पास कोई पैसा रखने का जगह नहीं है, ठीक है। इस कारण से उन लोगों के पास कोई सेफ प्लेस नहीं है जहां वो अपना पैसा रख सके, राइट। Whenever I travel to rural parts of the world, the farmers I meet talk about one thing that holds them back. They can't save their money. ठीक है, मतलब ये एक स्टेटमेंट दे रहा है कि जब भी हम गांव जाते हैं तो हमको ऐसे ऐसे फार्मर्स मिलते हैं जो बोलते हैं कि उन वो लोग अपने पैसे सेव ही नहीं कर सकते, ठीक।
वन में कोई एक रीजन दिख रहा है, दे डोंट हैव अ सेफ प्लेस टू पुट देयर मनी, राइट? एक रैशनल वो हो सकता है। 3 says farmers make most of their money during harvest time and they spend the most during the planting season when they buy seeds. ठीक है, तो ये है कि उनका अर्निंग कहां से हुआ और एक्सपेंडिचर कहां हुआ। ठीक है, storing it at home is risky as your house could catch on fire or be swept away in a flood or someone could break in and steal all your savings, right? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर नॉट सेविंग देयर मनी। ठीक, इसको यहां से भी हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि उनके पास कोई एक सेविंग्स क्यों नहीं है उनके पास, क्योंकि दे डोंट हैव एनी प्रॉपर प्लेस टू सेव देयर मनी। वो लोग घर में सेव कर नहीं सकते क्योंकि बाढ़ आ गया तो खत्म सब। ठीक है, फॉर मेनी पुअर स्मॉल होल्डर फार्मर्स द सॉल्यूशन इज सिंपल, यू डोंट सेव एट ऑल। ठीक है, तो अब चूंकि वो उन लोगों के पास क्या है, एक प्रॉब्लम है उनके पास। सबसे पहला चीज क्या आया कि ये ऑथर बोला कि हम जब भी गाँव जाते हैं हम देखते हैं कि फार्मर से, जितने भी फार्मर से इंटरेक्ट करते हैं, वन थिंग इज वेरी कॉमन, ठीक है, कि दे डोंट कीप देयर मनी। ठीक है, दे कांट सेव देयर मनी। अब उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, रीजन ये है कि उनके पास कोई सेफ प्लेस है नहीं, घर में वो पैसे रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके कारण फार्मर सॉल्यूशन के साथ क्या, किस सॉल्यूशन के साथ बाहर आए कि बचाओ ही मत, खत्म कर दो सब। ठीक है, अब ये और 3 क्या है? 3 सेइंग अबाउट व्हाट, कि व्हेन आर दे अर्निंग, व्हेन आर दे एक्सपेंडिंग। तो दैट्स नॉट द इंटेंशन ऑफ माइंड ना। माय इंटेंशन इज कि व्हाई आर दे नॉट एबल टू सेव देयर मनी and what are the solutions that they have come up with, right? So that's why 2, 4, 1 and 5 will be connected, 3 will be the odd one, and it's the very very easy question. ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को है सर, हाँ बोलिए। ऐसा आप अचानक से क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? क्या? ऐसा हमारे साथ आप अचानक से क्यों कर रहे हैं? एंटिसिपेशन, यू नो। हाँ ठीक है, चलो यहाँ वीडियो ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं। इट्स वही समरी है। ये समरी तो देख के ही छोड़ देना एग्जाम में, कितना भी आसान हो, कुछ भी हो, देख के छोड़ देना। आरसी पढ़ लेगा इतना में एक इंसान। मेरे को आरसी ही लगा, मेरे को लगा साला अचानक से भी में आरसी कहाँ डाल दिए। इतना देर में तो एक इंसान आरसी ही पढ़ लेगा। करना है ये क्वेश्चन या छोड़ दे, स्किप कर दे इसको। एग्जाम में तो ऐसे भी नहीं करना है तो करके फायदा नहीं है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, स्किप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस करने ही नहीं है तो ये भी स्किप ही करना है ना, ये कर लो। हाँ हाँ मुरली, you won't be doing that in examination, right? If you want, I can do that at last, don't worry. But if you won't be doing that in examination, so it doesn't make any sense, ना बच्चा। Check your answer, Rohit. You have made good pairs, बच्चा. You have made good pairs.
Check your answer, Bacha Ananya. Again, you have made good pairs, Ananya. Placement of your open statement is at wrong place. Check your answer, Aditya. Perfectly fine. मैंने तुम्हें क्या कुछ बताया है? क्या बोला अभी आप? मैंने तुम्हें क्या कुछ बताया है? Check your answer, Vandana. Check your answer, Ankit. तुम्हारा कुछ मैसेज आया है क्या? मुझसे पूछ रहे हो? चलो देखते हैं गाइस, है ना? ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्या है यहाँ पे देखो, sentences given in the following question when properly sequenced form a coherent paragraph, right? पैरा जब मिल जाए, है ना? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया है, corporates with a significant exposure to import or export use derivative contracts to hedge against their exposure to certain currency. So it is talking about with those who are having a significant exposure to import or export and how they use derivative contracts. And why are they using it? They are using it to hedge against their exposure to a certain currency. Okay. One can use a currency future contract to exchange one currency for another at a future date, at a price. So it is talking about how you can use a currency future contract. You can use it to exchange one currency for another at a future date, at a price decided on the day of the purchase of the contract. In India, one can use derivative contracts to hedge against dollar, euro, UK and pound, yen, DN. ठीक है? Now see, अब अगर तुम देखोगे तो in India one can use derivative contracts for these things. So it is talking about the usage of derivative contracts. ठीक है? And one is talking about how to use the derivative contract. ठीक है? How are people using derivative contract? तो मेरे को एक लॉजिकल पेयर तो यहाँ से 1-3 का दिख गया, that's for sure. ठीक है? कि मैंने बोला कि corporates with a significant exposure to import and export use derivative contract to hedge against their exposure to a certain currency. उसके बाद मैंने बोला कि इंडिया में corporates के बाद में आया इंडिया में कि इंडिया में इन चीजों को क्या किया जाता है, these derivative contracts are used to hedge against dollar, euro, UK, pound and yen. So 1-3 is my pair, ये मेरे को दिख गया, ठीक है? While all such currency contracts are cash settled in rupees, the Security and Exchange Board of India now allows cross currency contracts on euro dollar, pound dollar and dollar yen. All such currency contracts means ये सारे currency contracts को describe कर रहा है, accumulate कर रहा है within itself. So उससे पहले जितने भी currency contracts होंगे उसके बारे में मैं बात कर चुका हूँगा, right? तो 4 will be my conclusion अभी के लिए. अगर उससे मतलब 1-3 के बाद ही आएगा, that's for sure. क्योंकि 5 में क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है वो मेरे को नहीं पता है अभी. 5 says currency derivatives are exchange based futures and option contracts that allow one to hedge against currency movement. Now this is talking about that currency derivative. That means all such currency contracts वाली बात जो है उससे पहले ये currency derivative भी आएगा, मतलब ये मेरा 1-3-4 श्योर हो गया. Where to put 5 and 1? 5 says about currency derivatives are exchange based futures and option contracts that allow one to hedge against currency movement. ठीक है? And now it is telling you about this कि one can use a currency future contract to exchange one currency for another at a future date. ठीक है? तो मैंने पहले currency derivative के बारे में बताया, फिर उसके usage के बारे में बताया, right? तो 5, 2, 1, 3, 4 will be my pair.
एक और चीज जो यहाँ पे आ सकती है कि 1 3 5 2 4 कैन बी माई पेयर, राइट। इन दोनों में मेरे को कंफ्यूजन है कि इन दोनों में क्या होगा। तो अब मैं देखूंगा इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन 3 एंड 5। ठीक है, क्योंकि 1 3 का पेयर मेरे को दिखा हुआ था, 5 2 का पेयर मेरे को दिखा हुआ था। अब मैं देखूंगा कि 3 5 के बीच में कुछ है क्या। 3 is telling about one can use derivative contract to this currency derivatives are exchange, मतलब ये एकदम अब्रप्ट सा हो गया मेरा। तो 5 2 1 3 4 will be my answer, right? कोई डाउट्स? मुझे बता दिया करो कि मेरा ठीक है। ये सिर्फ तेरा प्रॉब्लम नहीं है आज, ये सब पूरे क्लास का प्रॉब्लम है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। मैंने कहा इतना हार्ड है, मैंने मुझे लग रहा है मेरा सही है। सर बता देंगे इस बार तो, है ना। अनन्या को देखो वो 4 बार लिखी है 5 2 1 3 4 क्वेश्चन मार्क, 5 2 1 3 4 क्वेश्चन मार्क। उसका ट्रिक मैं बताता हूँ ब्रो। पहले गलत डाल दे तो तेरे को पता लग जाएगा वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद सही डाल दे। तो अगर सही डाला है वो शांत है तो तेरा सही है। आई एम एंजॉयिंग दिस थिंग, यू नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गई, आज ये लास्ट करते हैं। Check your answer आदित्य, check your answer अनन्या, check your answer विक्रांत। अच्छा विक्रांत का इस क्वेश्चन में आया ही नहीं। ठीक है। Check your answer Itisri, check your answer Murli। Check your answer Sivai, check your answer Mahendra, check your answer Ananya। Check your answer Vinit, Ankit, check your answer, check your answer Vikrant। कौन सा है? 1.5 minutes more, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी का सही नहीं है अभी तक, बस इतना जान लो, अभी तक किसी का सही नहीं। सारे चैट्स मैं पढ़ चुका हूँ, किसी का सही नहीं।
बस एक हिंट में इस क्वेश्चन को देखो, एट द एंड रखने का मेरा प्लानिंग क्या था ना, ठीक है, दिस इज अ क्रोनोलॉजी बेस्ड पीज है। एक हिंट मैं देता हूँ, दिस इज अ क्रोनोलॉजी बेस्ड पीज है, चीजें आसान हो जाएंगी तुम्हारी। ना मैं क्यों आंसर सर करें, नहीं तीसरी, नहीं अंकित, आदित्य तूने आंसर दिया, किसी का आंसर अभी तक सही नहीं आया है, किसी का नहीं आया। गलती से किसी का चैट छूट गया ना तो मेरे को जान से मार देगा। नहीं आया, पक्का नहीं आया। चलो वेट कर लो, अब कोई मत लिखना, वेट कर लो, वेट कर लो। नहीं नहीं वेंकट, नहीं शिवाय, सबका गलत है। देखो सबसे पहले जब मैंने तुम लोगों को बोला ना कि इट्स अ क्रोनोलॉजी बेस्ड, व्हाट डिड आई मीन बाय दैट, है ना। मोर इम्पोर्टेंटली, while existing large urban agglomerations have remained mostly constant in number since 2005, small clusters have risen significantly. So it is talking about ki small clusters, large urban agglomerations have remained constant, but smaller clusters of urban agglomeration have risen significantly, right? So that means it is talking about ki urban population thoda sa climb kiya hai. Perfect. With an increase in urban population will come rising demands for basic services such as clean water, public transportation, sewage, etc., etc. So it is talking about ki once the urban population shoots up, what will be the effect of it, right? So it is trying to talk about the future scenario, right? Ki when the urban population will be overcrowded, when it will be crowded, what will be the effect of it, right? Perfect. Okay. Over 34% of India's current population lives in urban areas, rising 3% since 2011. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मैंने तुम लोगों को बोला कि इट्स काइंड ऑफ अ क्रोनोलॉजी बेस्ड आंसर, ठीक है, तो तुम लोगों का दिमाग सीधा कहा गया होगा कि एक के बाद तीन ही आना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे सिंपल चीज पहले देखो क्या दिया गया है कि ये बोल रहा है कि 34% ऑफ इंडिया करेंट पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द करेंट सिनेरियो, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज आई एम सेइंग यू कि ये 3% से 2011 से बढ़ता चला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आई एम सेइंग कि 2005 से जो है, ठीक है, वी हैव सीन अ पैटर्न कि large conglomerates have steadied, the numbers have not risen sharply, but smaller clusters, that's a pattern that we are seeing, that smaller clusters are increasing significantly. Cool. So if we have to place 1 and 3 as of now, we'll be placing 3 and 1, not 1 and 3. Why is it clear to you, all of you? The reason is clear. अरे एक और बार बताइएगा। See, it says over 34% of India's current population lives in urban areas, rising by 3% since 2011. यानी कि मैं अभी करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, राइट? कि 34% अभी के इसमें 34% जो है करंट पॉपुलेशन जो है, ठीक है, दे आर रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज। और ये क्या हो रहा है, 2011 से 3% बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। Now I am saying
कि आई हैव सीन अ जनरल पैटर्न कि 2005 से ही जो है, ठीक है ना, लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स जो बढ़ गए थे अर्बन पॉपुलेशन को बढ़ाने में, जिनका बहुत ज्यादा भागीदारी है, दे हैव स्टडीड अ बिट, बट जितने भी छोटे छोटे टुकड़े वाले लोग हैं ना, उनकी नंबर्स बहुत ज्यादा सूट अप कर गई हैं, और ये मैं 2005 से ही देखता आ रहा हूँ। ठीक है सर। समझ में आया? तो हाँ जब ठीक है मेरे सर। को 1 and 3 को पुट करना होगा, तो आई विल बी पुटिंग 3 and 1, not 1 and 3, though since 2005 is there and 2011 can come after that, but मेरे को जब मैं सेंटेंस को कोहेरेंटली पुट करूंगा तो मेरे को 3 1 दिखेगा। और दूसरी चीज ये कि 3 is my general statement, 1 is saying more importantly, हाँ that सर, means ठीक इससे है, पहले कुछ specific तो हो रहा आया है। रहेगा, हाँ। right? Now see, and yet cities look and feel downtrodden, riven with poverty and poor infrastructure with little semblance of urban planning. ठीक? तो यानी कि and yet cities look and feel downtrodden, मतलब भीड़ बढ़ती जा रही है ना, लेकिन फिर भी जो है ये क्या है, सिटी को जब तुम देखोगे, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, तो सिटी इज डाउनट्रोडन, इट इज रिवन विथ पॉवर्टी, right? By some estimates, India's urban population could increase to 814 million by 2050. Now, it is that giving you that ballpark figure, estimated ballpark figure, है ना? तो यहां से मेरे को एक चीज क्या दिखी कि मैं पहले तो सबसे पहले नंबर्स की बात कर रहा हूँ, 2011 में ये था, 2005 से ये पैटर्न देख रहा हूं मैं, और मेरे को लग रहा है कि 2050 तक ये यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा मेरा अर्बन पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। फिर भी जब मैं अर्बन पॉपुलेशन को देखता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या दिखता है, इट्स रिडन विथ पॉवर्टी, या नहीं तो 2 भी अभी पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज तो मेरे को सीधा दिख गया कि 315 मेरा एक पेयर ट्रिपलेट बना रहा है। ये क्लियर है सबको? अभी 2 कहाँ आएगा, 4 कहाँ आएगा, मत ढूंढो, ढूंढते हैं सर 531 के बाद क्यों आएगा? 5-3, क्योंकि मेरा एस्टिमेटेड फिगर है ना बच्चा, कि 2011 से हम ये पैटर्न देख रहे हैं, 2000 मतलब 2011 से हर साल 3% बढ़ रहा है, लेकिन ये पैटर्न हाँ। मेरे को 2005 से ही दिख रहा है, और 2050 तक ये वहां पहुंच जाएगा। सर ऐसे क्यों नहीं बोल सकते कि 2050 में ये प्रोजेक्टेड फिगर है? हाँ। क्योंकि 2011 से हम देख रहे हैं कि 3-3% का राइज हो रहा है, बट उस राइज में मतलब मोटी पार्टी का हाथ कम था और छोटे छोटे बट पार्टी का कहाँ हाथ है, ज्यादा था। बट कहाँ है, बट कहाँ है, वो बट जो तुम बोल रहे हो ना, वो बट कहाँ है? तुम मीनिंग ही चेंज कर दे रहे हो। अच्छा। तुम्हारा वो कंजंक्शन बट जो तुम ढूंढ रहे हो, वो तुमको कहाँ दिख रहा है सेंटेंस में, राइट? तो पहले मैंने 11 को वाला बताया, उसमें मैंने बोला कि मोर इंपॉर्टेंटली इसमें इसका हाथ ज्यादा है, इसका हाथ कम है, ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि 2050 तक हम यहाँ पहुंच सकते हैं, राइट? क्लियर? तो मेरे को ये पेयर तो ट्रिपलेट तो मेरे को दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं कि 2 और 4। जब मैंने 5 पढ़ा, बाय सम एस्टिमेट्स इंडिया अर्बन पॉपुलेशन कुड इंक्रीज टू 814 मिलियन बाय 2050, उसके बाद मेरे को दोनों सही लग रहा है। With an increase in urban population will come rising demands for basic services such as clean water, public transportation, etc. etc. मतलब ये मेरे को जब लग रहा है कि ये मेरा फिगर यहाँ तक पड़ जाएगा, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, और जैसे जैसे इंक्रीज ये क्या होता है, तुम्हारा अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज करता जाएगा, उसी के हिसाब से तुम्हारा क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी बेसिक सर्विसेज की, लाइक क्लीन वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। And yet cities look and feel downtrodden, riven with poverty and poor infrastructure with little semblance of urban planning. ये तुम्हारा अभी का बात कर रहा है, ठीक है, कि जब तुम अभी के सिनेरियो पे देखते हो, and yet cities look, this is the V1 tense, it is talking about the present scenario. When you look towards it right now, the city looks like a riven with poverty, downtrodden, poor infrastructure, etc. etc. ठीक है, और जब उसके बाद 2 क्या बोल रहा है कि जब और भीड़ बढ़ता जाएगा, तो विद एन इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, और क्या होगा,
इन चीजों की मारामारी और बढ़ जाएगी, राइट? तो दैट्स व्हाई अगर हम लोग इसको, ये चूंकि 315 के बाद मेरे को 2 और 4 दोनों दिख रहा था, या 4 2 दोनों मेरे को सही लग रहा था, लेकिन 4 इज टॉकिंग अबाउट अभी का सिनेरियो, 2 इज सॉरी 2 is talking about the future का scenario. That's why 31542 is more appropriate than 31524. Very, very difficult question. Very, very difficult. सर 4-2 हाँ, एक बार फिर से बताना, 4-2 क्यों होगा? 4 बच्चा अभी की बात कर रहा है, 2 बोल रहा है कि और भी जब बढ़ता जाएगा तो उसके बाद और जो इन चीजों की रिक्वायरमेंट्स है वो और बढ़ती चली जाएगी। तो दैट इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर में क्या होने वाले हालात है, और 4 इज टॉकिंग अबाउट अभी क्या चल रहा है। तो पहले मैं अभी बोलूंगा, फिर मैं फ्यूचर की बात बताऊंगा। तो 31542 बोल रहे हैं आप? या बिल्कुल ठीक है सर, अगर हम इसको ऐसे इंटरप्रेट हाँ। करें कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा तो बेसिक सर्विसेज की, इन सब की डिमांड बढ़ती रहेगी, ठीक है। बट फिर भी करंटली जैसे क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो करंट एंड येट मतलब ऐसा है, बट स्टिल इसका बट सिटीज कहाँ से ला रहे हो? सिटीज की हालत जो है, वही मैं बोल रहा अरे हूँ ना कि- मतलब हाँ बोलो। एंड येट को आप अगर आप सिमिलर वर्ड्स में कोई और वर्ड बोलना चाहो तो आप क्या बोलोगे? तुम अपना सीक्वेंस बताओ मेरे को, अपना सीक्वेंस बताओ। सर 315 तो मैं समझ गया, मेरे को तो 2 और 2-4 का पेयर समझ आ रहा था, 4-2 का समझ नहीं आ रहा कैसे आएगा। With an increase in urban population will come rising demands for basic services etc etc। ठीक है, तुम हाँ, बोल रहे हो कि and ये ऐसा होगा, ठीक है, और तुम जब सिटी को देख रहे हो, ठीक है, तो तुमको सिटी डाउन विथ पॉवर्टी दिख रहा है, मतलब तुम पहले फ्यूचर में जा रहे हो, फिर तुम सिटी को अभी के सिनेरियो में देख रहे हो। सर मैं अगर वहां पे इसको अगर पास से कनेक्ट कर रहा हूँ ना कि जैसे 2011 से 3-3% का राइज दिख रहा है अपने को। अरे 315 तक तो ठीक है, हाँ, ठीक है। 24 में जब मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारा 24 में जब तुम बात कर रहे हो, विद एन इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन विल कम राइजिंग डिमांड्स फॉर दी सर्विसेज बेसिक एमेनिटीज, राइट? हाँ, ठीक। So when you are talking about कि these are the circumstances where you will require more basic amenities, ठीक है, and yet then you are, if you are considering option 4, and yet cities look and feel downtrodden, is it making some coherent sequence? सर लेकिन अगर हम 3-1 जैसे 5 आपका लास्ट आप सेंटेंस एंड कर रहे हो, बाय सम एस्टिमेट्स इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन कुड इंक्रीज, हम 3-1 और 5 में कंप्लीटली पॉपुलेशन की इंक्रीज या डिक्रीज की बात कर रहे हैं, और अगर हम 3-1-5 के बाद 4 लगा दे एंड येट सिटीज लुक लाइक डाउन ट्रॉडन, उसका भी तो कोई सेंस नहीं बनेगा ना कि अचानक से आप पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेम्बलेंस ऑफ अर्बन प्लानिंग ले आओ। यहाँ पे देखो ना, more importantly, while existing larger have remained mostly constant in numbers, small clusters have risen significantly, right? By some India's urban population could increase to 814 million, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, राइट? लेकिन फिर भी जब तुम अर्बन पॉपुलेशन की तरफ देख रहे हो तो तुमको वहां गरीबी ही दिख रही है, तुमको वही दिख रहा है कि रोड में पूरे बिखरे पड़े हैं, एवरीथिंग इज डिस्गस्टेड, ठीक है, और यहाँ पे ना ही कोई प्लानिंग है ना ही कुछ है। हाँ पॉइंट थोड़ा सिमिलर बेसिस पे है मेरा। अगर हम लोग इसी बात पे लेके चलते हैं कि ठीक है अभी प्रेजेंट में बात हो रही है, फिर फ्यूचर की बात हो रही है, तो 3 हो गया प्रेजेंट की बात, 1 में हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 4 भी पास्ट की बात कर रहे हैं, तो 3-1-4 क्यों नहीं ले सकते साथ में? फिर 5-2 मोर इम्पोर्टेंट 5-2 तो फुल ऑन पूरा फ्यूचर की बात हो रही है कि जब होगा तो कुड इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज के साथ साथ ये सब जो डिमांड हो जाएगी। जब वहां तुम्हारा सीक्वेंस जो आ रहा है ना, वो तुम सबसे पहले तो तुम जो बात कर रही हो, तुम अपने सेंटेंस को जो कोहेरेंट फ्लो दे रही हो, वो तुम्हारा नंबर्स का फ्लो है बच्चा, ठीक है। तो तुम वहां पे सबसे पहले नंबर्स के फ्लो को दे रही हो कि हम देख रहे हैं कि ये नंबर ऐसा था, उस टाइम पे ऐसा था, उस टाइम पे ऐसा था, फ्यूचर में ये नंबर ऐसा पहुंच जाएगा,
तो वो तुम्हारा नंबर का फ्लो का कॉन्सेप्ट तुम पहले पूरा कर रही हो। उसके बाद इतना स्मूथ नहीं आ रहा है ना, किसके बाद? उसके बाद 5 के बाद 4 और 2 का ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं लग रहा है, क्लीन है इसलिए मैंने बीच में 4 डाला था हाँ देखो कि क्लीन है। पूरा पहले बात हो गई पास्ट की, अब सिर्फ फ्यूचर की बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, क्लीन है वहां पे। ये सिटी तुम अगर देखोगी स्मॉल क्लस्टर्स हैव राइजन सिग्निफिकेंटली। यहाँ के बाद जो भी तुम बात करोगी ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दीज क्लस्टर्स, तो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट नंबर ऑफ पर्सन्स ओनली। और वो नंबर ऑफ पर्सन्स जो है ना, वो तुम्हारा इंक्रीज ही होता जाएगा। तो वो नंबर के बारे में जब बात करिए तो 315 का पेयर तो फॉर श्योर है कि मेरा बनेगा, समझ गई। और उसके बाद तुम अगर 4 और 2 को लेके आओगी तो 4 2 में मेरे को क्या दिख रहा है कि 4 और 2 का जब हम रिजेम्बलेंस देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे मेरे को दिख रहा है कि इतनी भीड़ है, इतना कुछ है, फिर भी मेरे को लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग दिख रही है। और तू बोल रहा है कि हाँ सॉरी टू कट, बट 1 और 4 के बीच में तो आप 5 डाल दे रहे हो ना, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। एस्टिमेट के हिसाब से आप 1 और 4 का पेयर बना रहे हो कि 1 दिखा रहा है आपको कि 1 और मोर फिर इम्पोर्टेंटली अर्बन ऐसा होना चाहिए, मतलब अर्बन बढ़ रहा है आपका, लार्ज क्लस्टर आ रहे हैं, ये है वो है, बट एंड येट सिटीज आपको डाउन ट्रॉडन दिख रही है। बट आप 1 और 4 के बीच में जब आप 5 डाल दे रहे हो तो आपको फ्लो ब्रेक हो जाएगा ना, कि वो फ्लो एस्टिमेट्स ब्रेक इतने इतने हैं। नहीं, वही मैं तुमको वही चीज तो बता रहा हूँ कि फ्लो मेरा ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले फ्लो में मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ कि इतने सारे स्मॉल क्लस्टर्स आए, लेकिन फिर भी तुम्हारा मे भी हो सकता है कि उन्हीं क्लस्टर्स के कारण तुम्हारी पॉवर्टी वगैरह इंक्रीज दिख रही होगी, लेकिन पहले मेरा जो फ्लो नंबर्स का था, आई एम कंप्लीटिंग दैट फ्लो। सर वो वही तो कह रहा हूँ ना, कंप्लीशन के, जब आप कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो तो आप 5 बीच में लेके आ रहे हो, 5 से आप दूसरी रोड पे जा रहे हो, तो उस रोड से वापस आपको वो पॉवर्टी और अर्बनाइजेशन उसके वहां पे आने के लिए पहले 2 डालना पड़ेगा, कि इवन दो कि एस्टिमेट मैं ये लगा रहा हूँ कि 814 मिलियन हो जाएगा, उसके साथ साथ हमें डिमांड में राइज दिखेगा बेसिक सर्विसेज के, जैसे क्लीन वाटर, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, बट एंड येट सिटीज हमें ऐसी ऐसी दिख रही है करके। देखो तुम्हारा अपनी जगह पे सोच ठीक है ना, लेकिन जब मेरा, मैं तुमको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ से खेल किस चीज का चला है। 34% ऑफ इंडिया करेंट पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज, ठीक है, एंड दैट नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 3% every now and then since 2011, right? Then you talk ki we have seen how this number is increasing. These are not being increased by urban agglomeration, but these are being increased by तुम्हारा क्या है, constant number of smaller clusters of people, right? So you are again यहाँ पे तुम टॉक कर रहे हो, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो कि उनका नंबर बढ़ कैसे रहा है। तो तुम अभी फिर उसी क्योंकि अभी तक तुम्हारा पूरा ये जो है फ्लो जो है, तुम्हारा कंसंट्रेशन जो है वो नंबर इंक्रीज कैसे कर रहा है उस पे जा रहा है, ठीक है। तो वंस यू आर कंसीडरिंग दैट, तो यहाँ से तुम्हारा वही नंबर वाला कॉन्सेप्ट का फ्लो आगे बढ़ेगा। देन यू विल से कि मतलब, लेकिन फिर भी इतनी पॉपुलेशन से इतना चीज है, बट स्मॉलर क्लस्टर्स के कारण देखो पॉवर्टी दिख रही है, ठीक है, और वो पॉवर्टी के कारण, और फिर भी अगर नंबर्स बढ़ता रहा, जो भी होता रहा, तो आगे चल के वो बेसिक सर्विसेज, बेसिक एमेनिटीज जो है, that will be required more and more, and there will be scarcity of that. सर वो स्कार्सिटी की वजह से तो आपको पॉवर्टी दिख रही है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, छोड़ देना। हाँ मतलब मैं देखता हूँ इसका, मेरे को इसका कोई मैं एक्सप्लेनेशन मैं देखता हूँ, अगर कहीं एक्सप्लेनेशन होगा इसका पढ़ा हुआ है ना, तो मैं तुम लोगों को कुछ तो डाल ही दूंगा सर, नेगेटिव तो जाएगा नहीं। हाँ मैं तुमको इसका एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ, अगर मिल गया मेरे को तो मैं भेज दूंगा, है ना। बट आंसर 31542 ही होगा, ये फॉर है मेरे को, ये बना हुआ है ना। चलिए ठीक है, चलो भाई, गुड नाइट। सो जितने लोग कैटवे के हैं अभी यहाँ पे, कौन कौन है? अंकित, भाई देयर इज अ बैड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। आई केम टू नो इट, क्लास लेने का मेरा मन था भी नहीं तभी। श्वेता कृष्णन, यू मस्ट हैव हर्ड हर नेम, सबको पता होगा। शी हैड वेंट टू कोमा, उसको ब्लड कैंसर था, शी हैड वेंट टू कोमा। उसकी आज एक फ्रेंड थी इजाबेल, ये मत बोलो सर, इजाबेल पॉल, शी मैसेज्ड मी आउट 8:45 के अराउंड,
She took her last breath at 5. Yeah. So that was a thing of shock to me. I talked to her, I messaged her. I talked to her yesterday for around 3 hours. लगभग 12 बजे से हमारी बात शुरू हुई थी and I was talking to her till 3. रुक जा, मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करने दो.